राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। Madam, when I was going through the budget speech, I was actually taken in by the key words that you used throughout the speech. Digital, green, climate, Atmanirbhar, made in India, capital expenditure, ease of doing business, tax revenues, GST collection, futuristic economy driven by technology, clean fuel, smart cities. But there were certain words which are missing. What were those? Unemployment, poverty, food security, informal sector, migrants, daily wages, health for all, welfare, social protection, women, youth. Now I ask myself, who is this budget for? Is it for that 1 or 2% of the people at the top who buy all the airports and all the ports? Or is it for, and what's the responsibility of any government and the finance minister? The responsibility is to take care of the people at the bottom of the pyramid. वित्त मंत्री जी, जब आप किसी परिंदे को उड़ते देखते हैं तो वो आसमान पे नहीं देखता। कभी देखा आपने कि परिंदा आसमान की तरफ देख रहा है? और जो पशु, जो जानवर जो नीचे जमीन पे हैं, कभी उनको देखा है कि वो आसमान की तरफ देख रहे हैं? कभी नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि असलियत जमीन पे होता है। आप लोग आसमान की तरफ देखते हो, फेंकते हो, सपने फेंकते हो, सपने दिखाते हो। जमीन को देखिए, हिंदुस्तान की जनता के हालात को देखिए। जो एक महिला वो ये सोचती होगी कि मेरा कल क्या होने वाला है, उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ बताता हूं। पहली बात तो ये है कि आप अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, so World Bank data 2019 says that India had a level of unemployment of 23% amongst the youth. 23%. China unemployment rate in neighboring countries 2020 data by the Center for Economic Data and Analysis based on ILO database. China had an unemployment of 5%, Bangladesh 5.3%, Pakistan 4.65%, Sri Lanka 4.84%, and India 7.11%. This is where we are. This is your shining India, whatever. Now, you have said that I have increased the capital expenditure by 2 lakh crore. That's what you say, to 7.5 lakh crores. तो जो 2 लाख करोड़ है, that is for the purposes of building infrastructure. बट आपने कभी देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ है? आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ, शायद आप भूल गए होंगे। इंडस्ट्री वाइज जॉब लॉसेस आपको बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग 9.8 मिलियन लॉस ऑफ जॉब्स, होटल एंड टूरिज्म 5 मिलियन, एजुकेशन 4 मिलियन, overall services sector 1.8 million, fall in central government employment 3.32 million. In 2012-13 it's now 3.31 million. Employment in railways 1.27 million. ये तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर हैं। तो अगर आप सड़कें बनाओगे तो वो इन सेक्टर्स का क्या होगा? होटल और टूरिज्म का क्या होगा? एमएसएमई सेक्टर का क्या होगा? एजुकेशन का क्या होगा?
ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर का क्या होगा? तो व्हेन यू हैव टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू डू इट सेक्टर वाइज. यू हैव टू गिव देम रिलीफ सेक्टर वाइज. जो आपके सड़कों में जो लोग लेबर आती है वो मोस्टली अनस्किल्ड रहती है. अच्छी बात है कि आपने 2 लाख करोड़ दिया है, उसमें से 1 लाख करोड़ तो आपने लोन दिया है स्टेट्स को, केवल लोन, वो भी 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन. इसका मतलब क्या होगा कि वो पहले तो आप तय करेंगे कि स्टेट को जाएगा, वो ये भी मालूम है कि किन किन स्टेटों को मिलेगा. फिर कई स्टेट चाहेंगे ही नहीं कि आपसे लोन ले, क्योंकि वो टाइड अप रहेगा, क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे तो आपकी अनुमति चाहिए. तो ऐसे बजट नहीं बनने चाहते. कल मेरे चिदम्बरम साहब ने 3 W's की बात की थी. अभी हम वेल्थ की बात करते हैं, बिकॉज I believe that this particular budget has no vision, no real long-term plan. And let me explain something to you, and through you, hopefully the people of India are listening. Anywhere in the world, wealth is created in universities. Wealth is never created by industry. Industry uses the ideas and the innovations that come through young people in the universities and then turn them into goods and services. So if you give benefits to industry, it's not going to create wealth. It is going to create wealth for those individuals, but the real wealth of the nation will be created in the university system. And let me tell you that, and you'd be really shocked. And the other real wealth created will be on the basis of research and development. What kind of investment do you make in research and development? I'll give you some very interesting figures. That's why countries like America are wealthy, and that's why countries like India are where we are. The R&D percentage of GDP, and I'll not go into that, the US spends, mark the figure, $606 billion every year on R&D. What is our expenditure? And this is on PPP terms. Our expenditure is 47 billion. How is this country going to progress? China spends $514 billion on R&D. Countries like Japan spend 172, and they've got much smaller populations, $172 billion. Germany, $131 billion. France, $63 billion. Now, unless you put money in R&D, how will you create wealth? Unless you give your students the freedom, not the kind of freedom that we have seen in JNU, but the freedom to think, to converse, to have the freedom to decide on what to do, to bring about new ideas. If you go to any university in the United States, most of the universities are funded by the government. And in fact, there are businesses who have built campuses in the university system through their investment, aided by government. Now, if you don't give freedom in education, if you don't do investments in research, you're not going to create wealth in this country. And you've seen it in your 2019 budget. Look at the kind of benefits you gave to industry. Reducing the tax to 25%, then to 15%. The total tax now for new industry is 17%. We set up a new industry. No, they are not going to create wealth for the country. They may create some jobs. So I think that this nation should realize that unless we invest in the university system, for the ideas, for the IP to be created. What happens in the university system? The IP is created, and then business comes and does prototypes, and after prototypes, they actually see whether it's a viable commercial proposition. उसके बाद फिर वो बनती हैं, इंडस्ट्री में जाता है और वस्तुएं बनती हैं और सर्विसेज होती हैं. अगर उसमें आप ध्यान ही नहीं दोगे तो आप कौन से वेल्थ की बात कर रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी भारी समस्या है. और फिर दूसरी बात कि हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ जैसे हमारे घरों में परिवार है, हिंदुस्तान भी एक परिवार है. और जो माँ होती है वो क्या सोचती है
हमेशा सबसे जो कमजोर बच्चा होता है ना, हमेशा उसके बारे में सोचती है। और अगर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि जो अपने आप में ठीक ठाक है, आत्मनिर्भर है बच्चा, उसको तो आप छोड़ देते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस बजट में आपने देखा कोई मदद दी उनको? आपने ये जो पेट्रोल पे जो अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है इतने सालों में, और आज भी लागू हुआ है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में पेट्रोल का जो कीमत था पर लीटर वो 71 रुपया था, और जनवरी 2022 में वो 95 रुपये है। सेंट्रल एक्साइज जो हमने लागू की 2014 में वो 9.20 पर लीटर, 9.20 रुपये पर लीटर, और आपने 27 रुपये कर दिया उस पर एक्साइज। कितनी बढ़ोतरी हुई? 203%, 203%। डीजल पे 55 रुपये उसका दाम था पर लीटर, उस पे एक्साइज थी 3.46। आज दाम है 86 रुपये, उस पे एक्साइज है 21 रुपये, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो 530% है। 530% बढ़ोतरी इन द हेल्थ सेक्टर। I just want to tell you one thing, that the health expenditure in select countries in 2018, I don't have the figures after that, I'm sure the finance minister will be able to give them. हमारा जो per capita expenditure in health है वो $172 है, per capita expenditure in health, और जर्मनी का है 771, फ्रांस का 485, इटली का 853, साउथ कोरिया का 1044 पर कैपिटा, चाइना का $334। तो अगर हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हेल्थ का इस हालात, ये जो हालात दिख रहे हैं मुझे, तो बच्चे का ना तो स्वास्थ्य ठीक होगा, ना उसकी शिक्षा ठीक होगी। तो वेल्थ आप अडानी अंबानी से बनवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।